to okay, this particular task will help you to understand how to create a content of your first chapter. तो फर्स्ट चैप्टर कम से कम 10 पेजेस होना चाहिए आपका। 60 पेज का पेपर का रिपोर्ट बनाना है आपको, तो 60 पेजेस आएंगे कहाँ से? You have to give a thought what has to be written, what is its significance, how much it is important to write that particular content in your SIP. Based on that you will get a content. So introduction का 3 पार्ट में लिखना है। Let's suppose मैंने ये पहले भी एक बार वर्चुअल मीटिंग में बताया था, लेट मी रिपीट दैट। लेट्स सपोज यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? द सेम वे यू विल इंट्रोड्यूस योर प्रोजेक्ट, द सेम वे यू विल इंट्रोड्यूस योर SIP. You, if I ask you introduce me yourself, what are the things you are going to tell me? You will tell me your introduction in 2 ways. I think at least 2 ways. I mean, like, you will tell me about your personal introduction and you would be able to tell me about your professional introduction. So you will be having 2 types of introduction, 2 aspects of introduction. And the same way your SIP report also will have a 2 aspects of introduction. One is which is related to the personality of your SIP report, and another which is related to the professional approach of your SIP report. You will ask me, sir, what is the personality of SIP report? Let me tell you. In personality, what comes? Your report is, what is your report? Why this report is important? Where you have done that report? What is application of this study? Who is going to get benefits of this study? So यहाँ पे why this research, right? Why this research? एक चीज हो जाएगा। Are you getting? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Why this research? What is origin of this research? आपको क्यों लगा कि ये रिसर्च करना चाहिए था, right? What is, I mean, like, significance क्या है? What is importance of this study? Significance or importance of this study? ये study क्यों करोगे? आपने SIP किया. Let's suppose that Venkatesh was telling me that he has done his report into the some cycle company, bicycle company, where he was selling that some premium bicycle frames to his customers, that is his shopkeepers, I mean distribution channel partners. तो इसका importance क्या है? Let me tell you as an example. This study will be helpful for your company to understand what retailers are thinking about their product, right? This study will be helpful for the company to understand challenges that the retailers are facing. This study will be helpful for company to understand whether there is any defect in the product. The feedback given by the customers for that product would be helpful for company to make their product strategies, make their pricing strategies, make their distribution strategies. That particular report study is going to help your company to better understand your competitors, opinion of your channel partners for your competitors. What is significance? What is importance? Origin क्या है? When you as a intern joined that particular company, you decided, origin कहाँ से आया? When you joined as an intern for that particular company, you got an idea that I need to understand what is the opinion of retailers so that company can make a good strategies. अब ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे बिना प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाला नहीं है कंपनी का, बट you have to talk in a very confident language about your function that you did in a summer internship. So कैसे लिखना है? ओरिजिन को कैसे लिखोगे? कहाँ से आया ये टॉपिक? कौन बोला? क्यों बोला? क्या सिग्निफिकेंस, राइट? सिग्निफिकेंस क्या था? स्कोप क्या था? आई मीन, लाइक, स्कोप। अब वेंकटेश केस में स्कोप क्या है? यहाँ पे स्कोप का मतलब हमेशा होता है वेयर योर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ योर सब्जेक्ट। इसमें क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अभी स्पेलिंग को भूल जाओ आप थोड़ा। चैनल मैनेजमेंट पहला स्कोप, राइट? यस सर। और क्या था? रिटेलर्स बिहेवियर, राइट? और क्या था? क्या स्कोप बनते हैं आपके? फंक्शनल थ्योरी कहाँ कहाँ रिलेटेड है? कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, राइट? यस यस ये सर। सब चीजें आपको स्कोप में आएगा कि आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है भाई, कहाँ पे, मतलब क्या क्या चीज आपने स्टडी की है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ऐसा क्या क्या था जो आपने स्टडी किया। जो जो आपने स्टडी किया वो सब आपके स्कोप के अंडर आ जाएगा। तो आपके बुकलेट जो दिया है उसमें ये सब चीजें कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, राइट? तो स्कोप में एक तो फंक्शनल स्कोप हो गया, दिस इज व्हाट इज अ फंक्शनल स्कोप।
दूसरा होगा आपका जियोग्राफिकल स्कोप। जियोग्राफिकल स्कोप में क्या होगा? दिस स्टडी हैज बीन, लेट मी स्टे, GOGRA जियोग्राफिकल स्कोप। दिस स्टडी हैज बीन डन इन पुणे। और पुणे में क्यों? अब आपके कंपनी में, आपकी जो बाइसिकल कंपनी है उसमें पुणे में ही लॉन्च करने का क्यों सोचा? बिकॉज पुणे इज अ ट्रायल मार्केट, पुणे हैज अ लॉट ऑफ मिक्स ऑफ कस्टमर्स where poor, rich, middle class, average, IT, super rich, everybody is staying in Pune. Pune is a city of youth. Pune is the industrial development hub of India. Pune contributes a lot of in terms of IT into economics, so that the companies could launch their products easily in Pune, and because of that, it is very important and significant to study the Pune's customer behavior or retailers behavior, whatever you are working into that, right? This geography same applies with Nashik, same applies with Amul, same applies with that particular confectionery product, same applies with this bicycle. तो पार्ट 1 में क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है, किसको काम में आने वाला है, राइट? हु इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, राइट? किसको काम में आने वाला है? पर्सनैलिटी। और क्या हो सकता है? Why this research? Original, personal. What are the objectives? Objectives also will be a part of personality of your project, right? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Everybody, Yes, sir. yes or no? Yes, sir. Right? अब ये XYZ क्या है, ये चीजें आप ढूंढोगे। कुछ चीजें बुकलेट में दी होंगी और समथिंग दैट यू फील। पार्ट 3 में आपको क्लियर, ये एक हो गया पर्सनालिटी। you were talking about personality. Secondary, you were talking about, part 1 is about PERSON, personality. Part 2 is about professional introduction, right? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि ऐसे बकवास कर रहा हूं मैं? समझ रहा है सर। कंपनी इंट्रोडक्शन, राइट? समझ रहा है। कंपनी इंट्रोडक्शन, इसको आप परफेक्टली समझ लो। ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। दिस एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यू विल पुट इट इनटू कंपनी इंट्रोडक्शन, राइट? जब मैं आपको जब आप आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर डिजाइन करना सोचते हो, तो आपके दिमाग में सीधा ये आ जाता है, और फिर आप 4-5 पेज यहाँ वहां से चिपका के आप उसको खत्म कर देते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर प्रोजेक्ट टू द रीडर। प्रोजेक्ट किसके लिए लिख रहे हैं हम? जो पढ़ने वाला है उसके लिए। तो उसको पता होना चाहिए ना कि ये क्यों है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है, ये है कौन सा थियोरेटिकल फंक्शन आपने स्टडी किया, किस एरिया में किया। एक और होता है, इसके बाद टाइमलाइन स्कोप बोलते हैं इसको। कौन से ड्यूरेशन में किया, कितने ड्यूरेशन में किया ये स्टडी, राइट? when the study happened, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड योर रीडर शुड नो दिस पर्टिकुलर थिंग। Without knowing this particular thing, who the hell is going to read your SIP project? Only the person who is going to take Viva, and probably you also not. Generally what happens, students don't read their own SIP report. But that's what I'm not expecting. When I'm putting some efforts here, I want you people to really do it as a SIP, and you should be very much confident. And remember, your SIP will be helping you at least in initial 2 or 3 jobs. क्योंकि पहला जॉब जब मिलेगा तो 6 महीने 1 साल से ज्यादा कोई करने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट जॉब में आपको SIP के साथ जॉब का बताना है। सो दिस विल बी हेल्पिंग यू फॉर एटलीस्ट 2 जॉब्स, इन 2 जॉब्स इंटरव्यूज। तो फर्स्ट जॉब के लिए जितने 10-15 इंटरव्यू देने वाले हो, उसमें ये आपको हेल्प करने वाला है। क्लियर? Yes, Part sir. 2 is about professional introduction, right? Now, when you talk about professional introduction, generally, as a management student, I look it about, I mean, like, as a management student, and that too into marketing specialization, I want everybody to focus on at least 2 things. I want everybody to focus about 2-3 things. This company introduction may let me talk about this also, right? ये भी आएगा। So, समझ में आ रहा है ना? This. So when you talk about professional introduction, as a management student and as a marketing person, your report,
your report should comprises of few things. And if you tell these two things to the viva person or to the evaluator who is going to take your viva, your half work is done. And what are these two things? What is market size of the industry that you did your SIP in specific geographical location and in country and in global status. तो समझ में आया? आपको आपने जिस इंडस्ट्री में आपने आपका SIP रिपोर्ट किया है या स्टडी किया है या 2 महीने काम किया है, उस इंडस्ट्री का ग्लोबल स्टेटस पता होना चाहिए आपको। इस इंडस्ट्री का दुनिया में क्या सीन है, दुनिया में सबसे आई मीन लाइक व्हाट इज ग्लोबल स्टेटस, what is global need. For example, that particular lady was talking about the confectionery products, right? So you should be able to identify how much confectionery products are being consumed every year in the world. What is the quantity? Maybe in terms of units, in terms of weight, that is tons. वो consumables है तो difficult है, but try to find it out. अगर इलेक्ट्रिक कार्स है तो बहुत इजी है, टू व्हीलर्स है तो मोस्ट इजी है, mobile phones, durables, it is very easy to understand, right? So what is the global status without which you would not be called as a management student? अगर ये पता नहीं है तो मैनेजमेंट स्टूडेंट ही हो नहीं सकता है वो बंदा, क्योंकि किसी प्रोडक्ट में किसी कंपनी में somebody was asking me about that app, right? The app, the lady was talking about app. So you should understand what is the number of, I mean, like, what is global status? How many apps are there? How many downloads happen? In which country? Who uses? In which country? Which are the similar kind of job applications? What is the scope of such applications? ये सब चीजें आपको ग्लोबल स्टेटस के तरह एक बार उसमें लिखना चाहिए। तो ये हो गया आपका ग्लोबल स्टेटस। Similarly, once you identify global status, then you identify the country status, India specific status. Then if you're doing that study in Pune, then talk about the market size of Pune. एंड इन मार्केट साइज ऑफ पुणे, मार्केट साइज आपको 3 लेवल का निकालना पड़ेगा, ग्लोबल, कंट्री एंड यूर जियोग्राफी। जब तक आप पुणे तक पहुंच जाएंगे तब तक आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट साइज। डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ विद इन मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये मार्केट साइज क्या है इसके लिए आप यूट्यूब करो एक बार, और मार्केट शेयर क्या है उसके लिए भी आप यूट्यूब करिए, वो दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू नाउ, राइट? सो यू हैव टू फाइंड आउट 3 लेवल्स ऑफ मार्केट साइज, एंड देन when you reach to the market size of your geography where you did your SIP, somebody was talking about Nasik, somebody was talking about Pune, तो वहां तक जब पहुंच जाओगे तो उसके बाद you have to identify who are your competitors and what is their market share. Let's suppose पुणे में अगर 10 करोड़ का कॉन्फेक्शनरी एक साल में कंज्यूम किया जाता है, इट्स अ मार्केट साइज ऑफ पुणे कॉन्फेक्शनरी मार्केट। पुणे में अगर 25 करोड़ की साइकिल्स एक साल में बिक जाती है तो दैट इज द मार्केट साइज ऑफ द पुणे साइकिल मार्केट। पुणे में अगर 25,000 यूनिट साइकिल एक साल में बिक जाती है, प्रीमियम साइकिल, तो दैट इज द मार्केट साइज ऑफ पुणे फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। टाइम स्पैन, मार्केट साइज हमेशा जियोग्राफी और टाइम स्पैन को कंपेयर करता है। बिना जियोग्राफी और बिना टाइम स्पैन के आप मार्केट साइज और मार्केट शेयर नहीं निकाल सकते। इट इज ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक जियोग्राफी एंड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, आइदर मंथली मार्केट साइज or quarterly or biannually or annually. So your professional introduction of your SIP always should talk about this thing, irrespective of in which industry you have done. You might have done for market research, you might have done for your telecalling promotion, whatever. So ये होना जरूरी है and this should happen. Professional introduction of your SIP should be always there. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो एंड थर्ड वन इज मार्केट साइज। मार्केट साइज निकलनी है तो 25,000 साइकिल बिकती है पुणे में, 25,000 बाइसिकल्स आर बीइंग सोल्ड एवरी ईयर, सो दैट इज मार्केट साइज। सो विच कॉम्पिटिटर इज कंज्यूमिंग हाउ मच ऑफ दैट 25,000 इज योर मार्केट साइज। 25,000 में से आपके कंपनी का कितना बिका, लेट्स सपोज 12,500, तो कितना 50% आपका मार्केट साइज है। किसी और कंपनी का कितना बिका, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेजर कॉम्पिटिटर्स, and for major competitors you need to identify how much is their market size, market share.
सो ये 3 चीजें आपके प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन में एनालिसिस के साथ आनी चाहिए विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग। कहाँ से लिया डेटा, क्या आइडेंटिफाई हुआ और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मार्केट साइज पुणे की बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर आपका प्रोडक्ट लॉन्च करने या सेल करने में कोई मतलब ही नहीं। साइज ही नहीं है तो शेयर कहाँ से मिलेगा, कंजम्पशन ही नहीं है उस प्रोडक्ट का। हाँ समझ रहे सर। हो? यस सर। ओके, सो प्रोफेशनल पार्ट 1 पर्सनालिटी, पार्ट 2 प्रोफेशनल एंड पार्ट 3 अबाउट कंपनी। यू गॉट द पॉइंट? इतना कर पाओगे कल तक यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। Okay. Should I stop here now? Let's continue tomorrow. By 8:30, I will share you the link and be available with all your work done. Just tomorrow, I will probably talk about the see ये कंटेंट कहाँ से लाना है, कितना लाना है, क्या करना है, ये सब करना मेरा काम नहीं है, राइट? अब वाई दिस रिसर्च, इसमें आप 4 लाइन लिखना है, 40 लाइन लिखना है, कॉपी करके लिखना है, गूगल से लिखना है, दैट इज योर चॉइस. My role is to understand you, make you understand what has to be done and how it has to be done, right? क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा. एक्चुअल एग्जीक्यूशन तो आप लोगों को करना है, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको. बट ये कहाँ से डेटा लाना है? somebody will come tomorrow to me and tell that sir I am not getting data in a Google. I cannot help you in that, na? There is a data, right? There is a data. It is only how much time you put onto that and how much effort you put into that. So you all do this particular thing. Tomorrow I will let you know how to format, how to make a formatting of your summer internship report. टाइटल 1 फर्स्ट पेज से लेके एंड तक आपको मैं फॉर्मेटिंग सिखा दूंगा. 1.5-2 घंटे का सेशन चाहिए मुझे. You all come up with your laptop and you should be practicing along with me once I am showing it on a screen. Okay, good night. Thank you so much. There is someone in chat, Tazeen Sheikh. Tazeen, thank you so much for being always there, for helping me and assisting me to get into group and to schedule this meeting. Any question you have? Thank you, sir. Any question there? No sir. Thank you. Okay, I'll share this particular word file to you on WhatsApp group and you keep it for your reference and work accordingly. Okay. Okay. Yes sir. Should